Hello, everyone. Thank you for joining us for another session of Daftarkhwan Insights. My name is Ahmad Anwar. I'm founder of a platform called Sohan, and there we are addressing and trying to understand different social issues and stereotypes through the art of conversation and visual storytelling. And this session is brought to you by Daftarkhwan. And as we know, we have heard in our previous videos as well. Daftarkhwan is a place where they are hosting. Co-working community of entrepreneur professionals from all over Pakistan, and they are working on some of the very brilliant and most exciting ideas across multiple cities. So that is what Daftar Khan has been up to for the last 4 years. But through these sessions, they are basically bringing forward some of the brilliant professionals from all across of all walks of life, and they are sharing their expertise, and we are trying to understand these problems with them, and we are trying to learn from them. So this is the introduction, but today we are talking about something very important, and especially in the times of COVID, we are now into almost 2 years into this pandemic, and everyone's burned out, and that brings me to the introduction of my panelist. So first of all, I would like to welcome my guest today. Yeah. So today we have Sara Tahir with us, who is a counseling and psychotherapy graduate from Western Sydney University, and we have Hashim, a clinical psychology graduate from Murray University, and we are going to discuss burnouts. We are going to define them. We are going trying to understand them, and most importantly, we're trying to take. We were trying to understand and learn practical steps through which we can prevent it and we can take care of our health, mental and physical both. So these Sara and Shahroz are therapists at Zaaviyah, which is a client-oriented mental health platform, which is offering therapy and conducting research in Pakistan. Their work is really great. You should follow their social media channels. They are also running a number of campaigns on various issues regarding mental health. So first of all, I would like to welcome both of you to the show. Thank you. Thank you, Ahmad. It's really nice to be here as well. Thank Yeah. you. So I think we should start out. I'll start with Shahzor, and I Okay. would ask you a basic question. We talk about burnout, but at times we feel that it's just normal routine, and we feel that it's the same routine happening again and again. But sometimes you call it burnout, sometimes you call it boredom. But I want to understand, how do you define burnout? At what point I can say that this is now a burnout, this is not a boring routine for me, and then we can move on to the prevention and care as well. So usually when we talk about workspace, stress is something that we usually talk about. Okay, stress है काम पे, and a little bit of stress is fine क्योंकि that motivates you to do stuff. But when we realize कि ठीक है stress बढ़ रही है and you're not getting anything done, especially अगर आप काम पे you're spending more time at work, आप काम पे ज़्यादा time दे रहे हो, and despite that you're not seeing any work done, और उस पे obviously आपके पास फिर उसमें definitely चीज़ें आ जाती हैं that might contribute to the burnout. लेकिन the simple way that I explain to people the definition of burnout is कि think of stress that might motivate you. जो आपको maybe put some goals in your mind कि ठीक है I have stress, मुझे काम करना है. Burnout, for the way I sort of explain it, is कि when the stress is immense and just instead of motivating you, instead of making you work towards the goal, you don't see any work happening. कुछ हो भी नहीं रहा and you are stressed all the time, emotionally, physically. So that's when I see कि ठीक है अब burnout हो रहा है because the employee is getting affected, लेकिन काम फिर भी नहीं हो रहा. So that's when I see कि burnout हो रहा है. That's what the definition I think is burnout. Sarah, if you want to add anything to that. Yeah, I think it's high levels of stress that really end up, like Shahzor said, affecting your day-to-day life, your health, your productivity as well. So it's stress that, like Shahzor said, it doesn't motivate you anymore. It's not contributing to you performing productively in your workspace. It's basically just having an effect on your health, the way that you perceive things, the way that you perceive people. So basically, वो सिर्फ stress नहीं रह जाता at the end. It's affecting the way that you think, because it's you being in a constantly anxious state. It's you being in a constantly sort of firefighting state कि आप आपके around fire है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. There's constant stress. You come home, you aren't able to sleep because of that lack of rest. You aren't able to perform. So it's like you being stuck in a vicious cycle. Right. And I would also like, sorry, I would also like to add one more thing. Okay, sometimes
कुछ सिचुएशंस होती हैं, डेडलाइंस हैं, वी सॉर्ट ऑफ टेक अप मोर स्ट्रेस कि ठीक है लेट्स डू दिस वर्क. लेकिन वन इंडिकेटर इज कि जब काम ना भी हो, यू आर स्टिल स्ट्रेस्ड, यू हैव दिस नेगेटिव एसोसिएशन इन वर्क, मैं काम पे जाऊंगा, स्ट्रेस होगी, एंड दैट हाई लेवल ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस आर प्रेजेंट ऑल द टाइम. दैट्स वन ऑफ द फैक्टर दैट यू कैन लुक आउट फॉर. अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं क्योंकि जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि अक्सर हमें लगता है कि वो एक सेम रूटीन से हम बोर भी हो गए हैं. सो एक आपका स्ट्रेस ये फैक्टर आ रहा है कि यू हैव सेट गोल्स विच यू हैव टू अचीव, यू हैव सेट टारगेट्स, और उसका स्ट्रेस आप पे आ रहा है. बट उसके अलावा भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बर्नआउट में कंट्रीब्यूट करते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि समटाइम वर्क प्लेस में नोइंगली अननोइंगली ऐसा हो जाता है, वी हैव डिमांड्स ऑन अस कि ठीक है, वी हमारे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, हमारे स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर एम्बिग्विटी ज़्यादा हो जाती है, हम पे गोल, देयर आर सम गोल्स ऑन अस, देयर एक्सपेक्टेशन ऑन अस, बट रिसोर्सेज नहीं है. एम्बिग्विटी ज़्यादा है कि वी डोंट नो हाउ टू अचीव दोज गोल्स. और so this is the one side जिस पे ambiguity है, stress है, you don't know how to achieve those goals. Second thing that oftentimes add on to this is that there isn't any communication, effective communication between you and your higher up. If the person, if I put myself in this position, personally speaking, मुझे पता है goal ये है, for example, I have to write a report, लेकिन I don't have resources, I don't have any sort of insight कि report किस बारे में लिखनी है या काम क्या करना है, and on top of that फीडबैक या कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली राइट और रॉन्ग, तो फिर वो सॉर्ट ऑफ फीडबैक आ जाता है, व्हाट आई एम डूइंग आई डोंट नो वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, एंड वेदर व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली मेकिंग एनी एफर्ट, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी मेकिंग एनी एफर्ट अगर मुझे पता ही नहीं कि कोई डिफरेंस हो रहा है नहीं हो रहा. तो फिर जैसे सारा ने पहले कहा था कि वो एंग्जाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस होती है, देन यू जस्ट कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन विदाउट एनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दैट. सो इसमें अब अगर हम देखें, सो वी हैव रीच्ड, अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन हैज रीच्ड दैट स्टेज जहाँ पे वो बर्नआउट फील कर रहा है और उसको ये साइंस भी नज़र आ रहे हैं. सो व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं या इस चीज़ को बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है, प्रिवेंशन. तो चलें, एक बात की बात है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम ले सकते थे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट जहाँ पे वो अब उस पॉइंट पे पहुंच चुका है. ही और शी कैन सी द साइंस. सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग सेल्फ केयर? I think the first step usually is to take a step back, then focusing on what we can do later on. That comes a bit after. First step is always to take a step back and realizing what's been going on. To pick out things जिससे stress ज़्यादा हो रही है. अगर कोई specific काम है, या specific people at workplace जिससे interaction for example होती है, and that's an stressful interaction. To take a step back and sort of focus कि what's going on, कि काम पे क्या हो रहा है, what's going on in my personal life. And then there are definitely activities जिससे burnout कम किया जा सकता है, and those happen definitely at workplace and in your personal life as well, और फिर उस पे we can work on those as well. I think the first step is always to take a step back and sort of focus on, rather than focusing काम क्या करना है, कैसे job कैसे हो रही है, to focus on what you're feeling and whether that feeling is actually particularly related to a specific thing या general. If it's more general, if it's मतलब हर वक्त मौजूद है, जनरल है, without any provocation, then it might be burnout, and then you have to take a step back to realize कि how can I fix it. I think the first two steps है वो introspection होती है. अच्छा, इसमें एक और मेरे पॉइंट ज़हन में आया कि so we have done this, but then as we all know that there are some external factors जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं. If your boss is being a problem for you, यानी जैसे आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है वगैरह, and you can't really do anything about it, or at least you feel that you can't really do anything about it because मेरे से हायर अप हैं, वो मेरे से सीनियर हैं, ये प्रॉब्लम बजट नहीं मिला तो नहीं मिला. So, उन चीज़ों को आप जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं उनको हम किस तरह इंटरलाइज करते हैं, किस तरह उनको एड्रेस करते हैं, किस तरह उनके साथ एक वी कैन मेक पीस विद देम, इफ दैट्स द राइट वर्ड. I think कभी कभार even in clients sometimes mention कि काम बहुत है, जॉब पे मजा नहीं आ रहा, तो one thing जो मैं डिस्कस करता हूँ कि nobody likes their job. जॉब है, I mean up to an extent you appreciate the work you do, लेकिन just up till some point you would मतलब job is necessary, sometimes आपको satisfaction मिलती है कि you're doing something, लेकिन at the end of the day there are million things you would do rather than doing your job, but it's the harsh reality या जो भी reality है, you always have to do your job. So the thing that I sort of mention is कि there are some things जो job पे हैं, you can't change them, but then at the same time there are some things that are in your control as well. So for example, if as you mentioned कि अगर boss है नहीं बनती ही वो डांटते हैं, you can talk to your colleague
जो जहन में फीलिंग आ रही है, the things that you're feeling, the colleagues that you are good friends with, जिनसे आपकी अच्छी होती है, जिनसे आपकी अच्छी बनती है, you can talk to them. जो direct hire boss है, that might be a person that's not on a good terms with you, लेकिन you can talk to your maybe your immediate supervisor या colleague से to sort of कि ठीक है, मन हल्का हो जाए. And then there are other things जो आप अपनी personal life में कर सकते हैं. For example, taking care of yourself, leaving the job, having a work-life balance, ठीक है, काम है, stressful है, then making sure that once you're off work, to focus on things that are going in your personal life. फिर उसमें eating well आ जाता है, sleeping हो जाती है, time पे सोना, having and getting good amount of sleep, doing some exercise ताकि आप physically active हों. That's really linked to mental health कि जब आप exercise करते हैं, that helps you to sort of elevate your mental health. And उसके साथ फिर when you are off work, you need to focus on people in your life as well. क्योंकि अगर the interactions with people that happen at the workplace aren't good, so you have to make sure to offset with interactions you have in your personal life as well. Friends हो गए, family हो गए. Sometimes even writing helps as well because you're putting your thoughts on paper. You are sort of the negative thoughts भी अगर हम कहें, they are not stuck in your head all the time. आपको एक तरीका मिल रहा है to write it down and then think about those thoughts rather than those thoughts staying in your mind all the time. अच्छा, आपने वर्क लाइफ बैलेंस का भी जिक्र किया, उसमें हम लोग दोनों पर्सपेक्टिव से, आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन दैट फ्रॉम एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, जिस पे अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, एंड देन देयर इज एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव एज वेल. सो अगेन आप एज यूजुअल आई विल स्टार्ट विद द बेसिक कि हाउ वुड यू डिफाइन कि वर्क लाइफ हम किसको कहते हैं कि दिस इज अ बैलेंस्ड वर्क लाइफ हम कह सकते हैं, क्योंकि जर्नली सम पीपल एक्चुअली लाइक टू ब्रैग कि हम वर्कहोलिक, आई वर्क 15 आवर्स डे, 16 आवर्स डे, एंड a lot of times unfortunately जो है वो हमारे, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, तो जिसना बात कर रहे थे कि इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब फॉर देम, इट्स समथिंग दे आर पैशनेट अबाउट, बट इवेंचुअली एवरीवन जो है इज अफेक्टेड विद बर्न आउट वन वे और द अदर, अपना काम हो, जॉब हो. तो वो बैलेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंड देन अगेन द बोथ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव एंड द एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव. So I definitely agree कि burnout की prevention में sort of work-life balance does help as well. And speaking from an employee perspective, it's more straightforward than speaking from an employer's perspective. For example, जो भी employees होते हैं, people who work like as an employee, उनके hours fixed होते हैं on contract पे. Reality में होना that's a bit different thing, लेकिन contract पे hours fixed होते हैं. तो उस पे usually what helps is to make sure कि जब आप I think I would also borrow something from what we're discussing back as well. कि making sure ambiguity now. आपके roles अगर defined है, you know कि आपका sort of work क्या है, आपका goal क्या है, what's expected from you. So when you start your week, let's suppose, so if you decide कि आपका goals क्या हैं, if you decide your goals each day, so it will be easier for you to end your work day at the same specific time every day. So for example, if you end your work day at 5, to make sure to not take work home. Personally speaking, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि for example report कोई लिखनी है, I have to enter some details, तो काम खत्म हो गया, but I feel कि ठीक है, थोड़ा तो काम है, लेकिन let's do that. कल से फिर I'll start a new day. लेकिन what happens is कि वो छोटा छोटा जो काम हम flip करते रहते हैं from work to your personal life, that turns into slippery slope. Initially maybe आप 15 मिनट ज़्यादा काम कर रहे हैं, आधा घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, so rather than asking your boss कि ठीक है, the time that you have given me isn't enough for this much of task, आप सोच लेते हैं ठीक है, पहले भी तो मैं ऐसा करता हूँ, I'll manage it. So eventually it sort of cascades into 15, 20, फिर वो जो बाउंड्री होती है वर्क लाइफ की, वो थोड़ी ब्लर हो जाती है. यू एंड अप टेकिंग मोर वर्क होम, एंड जैसे जैसे वी आर डिस्कसिंग बिफोर के इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव योर पर्सनल लाइफ एज वेल, ताकि जो काम में आप स्ट्रेस होती है, द एनर्जी यू स्पेंड, ताकि वो रिचार्ज हो थोड़ी. यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, यू डू थिंग्स दैट योर हॉबीज, जो काम करने में आपको मजा आता है, दैट प्रोवाइड्स यू द रिवॉर्ड. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि जब आप काम करें, इट एंड and then you have time for your personal life as well, of my friends, hobbies, all of those things. Employers, especially entrepreneurs, उसमें one thing that often people confuse is कि passion है. Passion definitely helps you, motivates you, ठीक है. In the short term, it really helps you. You don't notice the sort of stress, you don't notice the negative effects that's happening क्योंकि you're motivated, passion है. लेकिन what most people fail to realize is कि वो passion और motivation उसकी भी limit होती है. After a while, it sort of runs out. और फिर आपको पता नहीं लगता कि because you are working, for example, let's say 12 hours a day before, जब वो
एनर्जी, पैशन, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं लगता कि when you change from being a passionate, motivated person to being a zombie like a workplace zombie sort of thing. तो आई थिंक उसमें इट्स इम्पोर्टेंट कि जैसे वी डिस्कसिंग थोड़ा सा काम थोड़ा कम करें, टेकिंग स्टेप बैक, ताकि आप फिर से एनर्जाइज हों टू रियलाइज कि ये जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, द थिंग दैट यू डूइंग, ये किसके लिए कर रहे हैं. इफ यू डूइंग इट योरसेल्फ, तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी अपनी केयर करें. सेल्फ केयर हो गई, मेकिंग श्योर कि आप स्ट्रेस ना हो, डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक टू डू, ताकि यू कैन डिफरेंशिएट योर जॉब फ्रॉम योर हॉबीज, from the activities that make you feel good. If you're doing these for your family, so making sure you spend time with them, ताकि थोड़ा बैलेंस आए कि मैं काम कर रहा हूँ, I'm making sure that I'm working for my family, I'm making new projects, I'm initiating new sort of startups for my family to make sure my family lives a good life, but also make sure कि family के साथ भी time spend हो, क्योंकि at the end of the day, अगर what they might value is your time rather than the fact that you're making startup. Both are though for you that might be equal, but for the family, the people in your life, they might prefer you spend more time with them. So I think initially the passion and motivation takes over. You go into overdrive, आप बहुत काम करते हैं. With time, those fade away. Then it's important to take some time off, and उसमें it might be a possible कि आप किसी की help ले सकें. Someone that might have done similar sort of job before, उसकी help लें, and then sort of divide, maybe take someone in for maybe an employee, a partner, something like that, ताकि आपके पास इतना टाइम हो कि आप फिर से एनर्जाइज हो सकें. वो जो पैशन जो आपका पहले था, वो बर्डन ना बन जाए. तो एट द एंड ऑफ द डे, टू मेक श्योर वो पैशन ही रहे rather than becoming burden, और आपका इंटरेस्ट उस sort of startup या entrepreneurial जो एस्पेक्ट है उससे खत्म हो जाए. So, Sara, we'll be talking about burnout, preventing of burnout, self-care. So, anything you would like to add to the existing point जो अभी हमारी बात हो रही थी? If you're noticing all of these signs, so it's a step for you, or it's a sign for you to take a step back towards self-care. So before we move on to prevention and care, it's really important to even know about the signs of burnout. जैसे शाज़ोर कहता है कि कभी-कभी हम we talk about कि अभी business start हो रहा है, I have to put in this much work, I have to work nights, and I have to put in these night shifts, and मुझे 15 hours a day काम करना है. So if all of that is leading to all of these signs and you're experiencing that, so don't avoid it, don't ignore it, really address these signs, and then we move on to prevention and care of burnout के बाद actually करना क्या चाहिए. Do you take a step back? Do you reevaluate what's important to you? Seek help if you want to. Seek help actually जैसे एक टैबू है कि मैं किसी से हेल्प मांग ही नहीं सकता, या what will people think, or मैं थेरेपी नहीं जा सकता, मैं पागल नहीं. So all of these thoughts, really addressing those, and like Shahroz said, maybe if you feel comfortable with a close friend or a colleague, talk to them about it, so that जो आपकी एक heightened state पे आप पहुंच चुके हैं because of the burnout that you're experiencing, you're able to take a step back from that, calm down a little bit, so that you're level-headed enough to see what my next step is going to be. Okay, so जिस तरह हमने बात की अभी पीछे, हमने सारा ने भी एक्सप्लेन किया, शाज़ोर ने एक्सप्लेन किया. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट. उसमें ये है कि माइंडफुलनेस की हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि हाउ अवेयर आर यू अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट्स हैपनिंग टू यू. उसके लिए आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हाउ टू सीक सपोर्ट, जिस पे भी सारा ने थोड़ी सी बात भी की है, बट आई वुड लाइक कि उसको ज़्यादा एलेबोरेट कर सकें, स्पेसिफिकली जो हमारे सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के दरमियान. और इसके अलावा अक्सर हम बात करते हैं कि वी टॉक अबाउट थिंग, वी लिसन टू डिफरेंट स्टफ, वी रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, बट देन देयर इज अ पॉइंट वेयर यू एक्चुअली हैव टू एक्ट. So your actions need to follow your words. So please comment on that. Right. So whenever I talk about mindfulness in the workplace, I usually, लोग ज़्यादातर इस बात से relate कर सकते हैं कि in most organizations there's a culture of reflection. कि आपने plan initially क्या किया था, whether it's towards a task or towards a goal that the organization wants to achieve or your specific department wants to achieve. So when that thing is done, you want to evaluate कि वो did it go according to plan, was it did we achieve our targets, did we achieve what we wanted to. So in that practice of reflection, there is this कि अच्छा हमने ये plan किया था,
this is how it actually went and what is our learning for next time, right? So this is mindfulness in the workplace culture, right? So you're actually reflecting on it, and if you take that in on an individual level, so it's something like a reflection towards yourself as well. Okay, when we're talking about burnout, so mindfulness wo hi hogi, what I talked about a little while earlier, you're really taking a step back and seeing, okay, am I experiencing these symptoms, and mindfulness also in terms of interacting with your colleagues or with your boss, जैसे आप और शाज़ और थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, it's also about really questioning yourself कि okay, I do feel irritable or I do feel stressed when I go into my boss's cabin. Why is that? Is it because of the way that he talks to me? Is it because he's looking down upon me? Is it because there's lack of clarity in terms of what he wants me to do? So just reflecting on these things, because हमारी life आजकल इतनी fast paced हो चुकी है कि we're just moving from one task to the other. We're feeling a little discomfort within ourselves, लेकिन वो बस stress है, just covering it up with this umbrella. So mindfulness helps in that context कि you're really being aware of, अच्छा, this is affecting me this way. Okay, this task seems stressful to me क्योंकि इस तरह की similar task मैंने last year जब की थी तो मेरा बुरा हाल हो गया था, So even though you haven't gone into that task right now, but क्योंकि वो last year वाला experience is affecting you, so that's how. And so being mindful in that helps you in that way क्योंकि you're able to tell yourself कि yes, I do have that memory of that experience not going well, लेकिन क्योंकि मैंने एक दफा किया तो I know what to expect. So just to be mindful of where the stress is coming for me. Why am I feeling anxious about this certain interaction? Why am I feeling uncomfortable when my boss is giving me more tasks than I can do? Is it because I'm not able to communicate or set a boundary for myself? The mindfulness is really, really important generally in life as well, but workplace may, I think, what I've talked about, it is important that way as well. So यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी, जिस तरह आप बात कर रहे हो कि हम आइडेंटिफाई कर सकें उन प्रॉब्लम क्या, उन फैक्टर्स को जो हमें स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरह के इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं. बट व्हेन अ पर्सन, you both of you work with different clients as well, so when people are stressed, so do you think are they able to identify the factors? क्योंकि जब एकदम स्ट्रेस हो जाता है, आप ओवरवेल्म हो जाते हो, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ. और इफ़ यू, अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली सर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या ये इतना आसान होता है उन लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना कि दिस इज समथिंग दैट इज ट्रिगरिंग मी? I think when you're in that situation, I wouldn't say कि ये आसान होता है identify करना, unless you're maybe like trained to think that way, or you've say accessed therapy at some point in your life, and your therapist has helped you get to the point that you can be mindful. But I think for a layman, it's most people, or it's difficult to identify कि मैं इस तरह या इतना इरिटेबल इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं बर्नआउट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ. इट जस्ट फील्स लाइक एवरीबडी इज आउट टू गेट मी. you're आपकी सोच का या अगर आपका परसेप्शन यही हो जाता है, then it's really difficult for you to identify. And so in a workplace, if that happens, I think the culture के ask for help if you feel that you're in difficulty, that should be propagated. कि वो managers or employers की duty है to encourage that kind of a culture. If you ask for help, it's not that you can't do it or that you're not capable. It's okay, we're all here to support you. So that culture in an organization definitely helps employees की mental health. जनरली एक और जो हमें जनरली हम देखते हैं रिस्पॉन्स वो होता है, ये तो ऐसा ही होता है. मतलब जनरली आप देखें, बच्चे ऐसे ही पलते हैं, नौकरियां ऐसी ही होती हैं, लाइफ ऐसी गुजरती है. तो दिस इज अनदर एटीट्यूड जो आपको जर्नलिस्ट रिप्लाई मिलता है व्हेन यू शेयर स्पेसिफिकली अपने हायर अप्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ. तो जनरली हमें जो एक स्टैंडर्ड आंसर मिलता है वो तो ये तो ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है. सो आई थिंक वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है कि इवन इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, तो यू आर बेसिकली बीइंग शट डाउन कि नहीं भाई, आपने कोई बहुत कोई कमाल नहीं किया, सबके साथ ऐसा ही होता है. Shahroz, I think you want to say something. Yeah, I think जैसे सारा ने कहा कि एंग्जाइटी होती है, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, उसमें हो जाता है. एंड जैसे आपने कहा कि लोग काफ़ी ऐसा, आप हायर अप से ही बात करते हैं, आई थिंक वो जो कंडीशनिंग होती है व्हेन यू आर
पेरेंट्स से बात की, यू ग्रो अप सीइंग योर फादर, जो जनरल पाकिस्तान सोसाइटी है, फादर इट्स वर्किंग ऑल द टाइम, रात को घर आते हैं, जस्ट गो टू स्लीप, आप टाइम स्पेंड नहीं करते। मदर है, वो घर का सारा काम कर रही है, आपको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलती, तो यू ग्रो अप थिंकिंग ठीक है ऐसा होता है। इवन इफ योर बॉस डजंट से, एक्सपेक्टेशन सॉर्ट ऑफ होती है, ठीक है बड़ा होके मुझे इतना काम ही करना है, आई वोंट हैव सम टाइम टू माई सेल्फ। एंड फिर जब वो स्ट्रेस होती है, आप जैसे सारा ने कहा कि यू कैन डिफरेंशिएट कि फिर वो अम्ब्रेला टर्म हो जाता है। द फैक्ट सारा ने जैसे पहले मेंशन किया था, जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, आप वो बेसिकली लॉजिक नहीं होता, दैट्स बेसिकली जस्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो यू कैन उस पे आप ये इंट्रिकेसीज नहीं देख पाते कि कैसा हो रहा है, कि किस तरीके से हो रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस है जहाँ से आ रही है, इट्स जस्ट जनरलाइज। तो आई थिंक दैट डेफिनेटली ट्रू कि एक तो ये होता है कि जो कंडीशनिंग हो रही होती है, मैसेजेस मिल रहे होते हैं ग्रोइंग अप देन फ्रॉम द बॉसेस, साथ में जो एम्प्लॉयज हो रहे हैं, दे माइट हैव आल्सो एक्सेप्टेड दैट वो भी हर वक्त काम कर रहे होते हैं, सारे सारे के सारे। एंड देन तो दैट सॉर्ट ऑफ फील्स होपलेस कि ठीक है सारे भी ऐसे काम कर रहे हैं एंड मुझे स्ट्रेस हो रही है, तो व्हाई, मतलब ठीक है, शुड आई जस्ट ब्लेंड इन विद एवरीबॉडी एल्स, या माय स्ट्रेस डजंट मीन एनीथिंग क्योंकि सारे भी स्ट्रेस है। तो वो सॉर्ट ऑफ ये भी अक्सर कहा जाता है कि इसको हो मैं जाता ही है। शायद मैं ज़्यादा वीक हूँ, या मेरे में शायद वो हम्म, कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं टू टेक प्रेशर, हम्म, और दैट अगेन इज समथिंग दैट यूजुअली इज रिफ्लेक्टेड बैडली प्रोफेशनली कि अच्छा भाई ये स्ट्रेस में काम नहीं कर सकते, वेयर एज के डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। सो सारा वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस, हमने बात की कि किस तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हम एक्शंस ले सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर another practical step, that is creating safe spaces for the team. At the employee level जो हमारे लीडर होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, टीम लीड है, at whatever level you are operating, you need safe space for yourself and your co-workers. So उनको अगेन जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, सेफ स्पेस को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्रिएट किया जा सकता है, and then you can talk about its importance and the need at workplace. अच्छा, ओके, सो जो हमारी वर्क प्लेस होती है, we spend most part of our day over there, right? So it's really important for it to be safe, for us to feel safe when we are there. So I'll just use this opportunity to talk about something that Shahroz and I have mentioned in the previous questions, which was the fight and flight mode. So whenever we feel unsafe, so there's this constant mode that our nervous system is in, which is the fight or flight mode. उसमें हम, we aren't thinking clearly, we aren't level-headed, we're in this constant state of anxiety या stress के ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, right? So for the workplace to not let us feel like that, there are a few things that managers or the organization or the HR can do for their employees. Number one is, I think कि एक open culture होना बहुत important है. Like जैसे अगर आपकी कोई tasks हैं, तो उनको बिल्कुल एक एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम ना बना दी जाए कि अगर ये ना हुआ तो आपकी तो कैपेबिलिटी है ही नहीं एज एन एम्प्लॉई, बट एज ए लर्निंग प्रॉब्लम आप उसको लें कि ओके, दिस इज आवर टास्क, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड लेट्स ब्रेनस्टॉर्म एंड सी कि अच्छा हाउ वी कैन हेल्प दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉई from our department, or how we can help our department achieve that. So it's also not putting like the stress of a really huge task on just one person and then threatening them or making them feel threatened कि ये ना हुआ तो आपकी तो promotion भी नहीं होगी, आप तो शायद निकल ही जाओ. So I think a bit of a concentration on that. Then there's a feedback culture के as a manager अगर आप अपनी team से भी feedback लेते रहें, तो that will also propagate this culture के the team members will also be comfortable in asking for feedback, receiving that, even if it's constructive criticism. So I think a lot depends on how the higher ups in the company receive that. So if they are open to receiving constructive criticism or improving themselves in terms of their relationships with their team members, though the team members will also learn from that, right? Other than that, I think one more thing which is absolutely very important is communication. For there to be clear communication, and that helps in boundary setting, that helps in the expectations that you have of employees. So I'll just go back to something that Shahroz talked about, which was work life balance में जब वो बात कर रहे थे कि after work hours are over, so what's expected of you. So in that, if the expectations are communicated, it's not expected that you're going to answer any emails after you leave the workspace, or if it's communicated that emergency situations mein you are required to answer that. So just when the expectations
are clearer, when the goals are clearer, so in that, the communication between HR and the employees or the manager and their team members, communication is key, even in terms of boundary setting. So for instance, you are able to set a boundary for yourself in the workspace ke, I don't appreciate when this and this happens, or when I'm made to feel this way, or when I get phone calls after my work hours are over and they need assistance then. So when I'm in the office, so setting boundaries, maybe communication is key. So I think even in creating safe spaces for the team, a lot is in the hands of the managers, and how they create realistic goals and expectations, how they communicate, how they sort of act as role models for their team members as well. And also maybe recognizing or checking in with their team members ke, if there's any support that they need, so that wo help wala culture bhi thoda sa propagate ho raha hai. Also providing that support, and then maybe even giving them a break after you've seen कि एक बहुत stressful project था, उसकी आज submission थी या जो भी है वो खत्म हुआ है, okay, why don't you take an hour off and go home early today? So just that culture of okay, we're supported, not that हमारे कंधों पे पूरी organization depend कर रही है, but just that अगर कर भी रही है तो we're supported, I have people I can count on, I can seek help. The culture of seeking help is normal. Maybe help is also available in the organization. Yeah, you have channels. Yeah, you're well informed कि अच्छा अगर मुझे ये है तो मैं किसके पास जाके बात कर सकता हूँ. So in that communication, I think हर area में communication is really important. So I think that's one thing that I would stress on. And I think this is also the part of leadership as well, qualities as well. जब आप बात करते हैं leadership की बात करते हैं, being leader की बात करते हैं, being a good manager बात करते हैं, these all things are part of that. Because personally, just to add on to bit, I recently went through the whole COVID episode. So उस पे 2 weeks में and I got ill, then my wife and then my baby as well. तो उसमें the organization शुरू में हफ्ता तो उन्होंने सब्र किया, but then again it was like कि बस दफ्तर गिरने वाला है, मतलब यार आप कहाँ पर है, and the onus was on me कि अच्छा आप available नहीं है, whatever. So yeah, I totally understand and I totally agree what you I are think saying. at this जी point, I would want to add something to this before we move on to our next point. And this connects to something that we were talking about earlier as well. कि वो जो एक कल्चर होता है कि आपको शट डाउन किया जाता है कि अच्छा सब कर रहे हैं आप भी करें, या काफ़ी देर होगी आपका कोविड अब तक ठीक नहीं हुआ, yeah. people are working from home, why don't you start doing that too, so it looks like I think as a society हमारे अंदर ना empathy बहुत कम है या कम होती जा रही है कि so taking the other person as human and maybe just really trying to imagine what they're going through and even trusting their word for it. Just अगर किसी का experience with this illness is really bad, and for some people it's not that bad. So just saying कि मेरा तो इतना बुरा नहीं था, ये ज़्यादा ड्रामे का, just don't think that your experience is it. Maybe just try and empathize with the other person. So as a society, I think all of us should be working towards this one common goal as well. I totally agree with you. Before I wrap up, last comment, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, इससे मैंने अभी कोविड की बात भी की. So this, I think ये जो सारी discussion हम आज कर भी रहे हैं, ये एक कोविड का रिजल्ट भी है. It's good that it's happening. It's good this conversation is happening. We are trying to understand. But I honestly think कि अगर कोविड ना होता तो शायद इतनी discussions ना हो रही होती कि वर्क फ्रॉम होम के क्या effects हैं, ऑफिस में आना वगैरह वगैरह वगैरह. सो आप लोगों का भी जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों के जो डिस्कशंस रही हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, आपके पेशेंट्स के साथ, उसमें वर्क फोर्स पे प्रोफेशनली क्या इम्पैक्ट आया है कोविड-19 का, क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर या इश्यूज हैं जो हाईलाइट हुए हैं, एंड किस तरह उनको एड्रेस किया गया है, किस तरह उनको एड्रेस किया जा सकता है. सो इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक both of you to comment on that before we wrap up. I think everything that we are discussing that have been dialed to an 11 COVID की वजह से. The one thing that I've noticed is कि जब हम communication की बात करते हैं, so as Sara mentioned, we usually get expected कि ठीक है, when you go off work, you're not sort of expected to reply to emails. लेकिन WhatsApp की वजह से there are groups everywhere. और उस पे even कोई छोटी चीज होती है, बॉस का मैसेज आता है, this is happening. और उस तक वो बहुत ambiguity हो जाती है कि are you supposed to reply or not, क्योंकि WhatsApp is on your phone, the phone is always on you. Unexpectedly expectation होगी कि you must have read the message, but उसकी फिर repercussions नहीं कि whether you are expected to reply or not. So I think एक तो चीज ये कि that aspect communication वाला, and the second aspect is कि जो work life balance की बात कर रहे थे,
पहले तो ये होता था कि क्योंकि ऑफिस फिजिकल होती थी तो बहुत बाइनरी होती थी, व्हेन यू आर एट द ऑफिस दैट्स वर्क, व्हेन यू आर एट द होम दैट्स होम। कोविड की वजह से बिकॉज इट वर्क फ्रॉम होम तो पूरा सॉर्ट ऑफ उसकी बाउंड्री भी ब्लर हो गई है। यू आर एट द होम, काफी लोग दे आर मोर कंफर्टेबल, दे आर वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन, दे आर इन देयर कंफी क्लोथ, खाना साथ पड़ा है, लाइक इट्स एवरीडे लाइफ, बट दे आर डूइंग देयर वर्क एज वेल। तो उस पे जो ट्रांजिशन होती है गोइंग फ्रॉम वर्क to your personal life, वो थोड़ी blur हो जाती है because you're still in your same clothes, you're still around the people that you're at home, but you don't know when the work thing stops. So I think उस part में it's really important कि work life जो boundary होती है उस पे थोड़ा और थोड़ी dynamic हो from the employee and the employers as well. Employers should be sort of the mind कि ठीक है, even if the employee is working from home doesn't mean कि he has to work all the time. वर्क फ्रॉम होम इसलिए नहीं है कि उससे ज्यादा काम डाला जाए, वर्क फ्रॉम होम इसलिए कि कोविड है एंड वी आर सॉर्ट ऑफ डूइंग दैट टू प्रोटेक्ट पीपल रादर देन मेकिंग देम ओवरवर्क। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज। आई थिंक वन थिंग दैट क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, वर्क माइट सीम अ बिट इजियर एज वेल क्योंकि यू डोंट हैव टू डू कम्यूट, आप घर पे हैं, यू हैव मोर टाइम टू योरसेल्फ। एक चीज आती है समटाइम्स पीपल ओवर कमिट, ठीक है घर पे हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम है, आई ओवर कमिट, तो उस पे व्हाट हैपेंस इज कि इनिशियल जो पैशन की हम बात कर रहे थे, taking up projects, taking up work, initially that might seem ठीक है, I'm doing more work, I'm feeling good, with time that runs out, and then what happens is कि जब जो आपने commit किया है, those things come back to sort of haunt you कि आपने commit तो बहुत ज्यादा कर लिया है, but you can't do that anymore. And one thing, an additional thing that I have noticed is कि क्योंकि you are working from home, you're around people a lot, वो लोग जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद देम, और काफी ऐसी चीजें जो मे बी उस वक्त हाईलाइट ना होती हैं, काफी नेगेटिव इंटरेक्शन होती हैं, काफी ऐसी इंटरेक्शन होती हैं जो आपने कभी माइंड ना की, ठीक है हफ्ते में एक बार किसी भाई बहन से लड़ाई होगी, पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट हो गया, दैट्स फाइन, बट बिकॉज नाउ यू आर मोर एट होम, एक्सपेक्टेशन घर पे भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, पीपल एक्सपेक्ट आप घर पे हैं तो यू स्पेंड मोर टाइम विद देम। तो आई थिंक उसकी मैनेजमेंट भी जरूरी है कि even if you're at home doesn't mean you are like it's your personal time, you're working, तो उससे and I get it कि फिर जो इंटरेक्शन ज्यादा होती हैं, there are more chances for negative interactions happening as well, तो उसमें भी जरूरी है कि you spend positive time as well, maybe do some joint activity as a family together, movie देख ली साथ, consistently आप dinner साथ खा रहे हैं, या I know going out is out of question, लेकिन घर पे कोई वीकेंड से कोई प्लान बना लिया, कोई मे बी मूवी नाइट या गेम नाइट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, टू मेक श्योर जो नेगेटिव इंटरेक्शन की जो चांसेस बढ़ गए हैं वो थोड़े कम हो जाएं। एंड आई थिंक द लास्ट थिंग दैट आई थिंक ऑफ इज सेटिंग अ लिमिट, कि अगर मुझे 5 बजे तक काम करना है तो मैं 5 बजे तक ही काम करूंगा, मे बी आई लीव द रूम आफ्टर दैट, या मैं रूम में बैठा हूँ, मैंने अपना व्हाट्सएप की जो कम्युनिकेशन है वो म्यूट कर दी, या मैंने ईमेल पे ऑफ कर दिया, एंड जस्ट लीव द वर्क अवे, ताकि वो जो work-life balance that stays intact rather than vanishing altogether. Sarah, your comment, please. Right. I think I'd agree with Shazor. Because of COVID, a lot of people are feeling overworked क्योंकि वो एक boundary जो office से घर आने में थोड़ी सी separate होती थी, वो भी अब blur हो गई है क्योंकि you're working from home, some people are working in their pajamas, in bed, तो वो sleep hygiene भी actually आपकी काफ़ी disturb होती है क्योंकि आप उसी space में बैठ के काम भी कर रहे हैं, उसी space में बैठ के movie भी देख रहे हैं, सो भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो it affects your mental health. Again, because of that boundary being blurred, तो वो breaks लेने का जो the importance of that is also blurred as well, क्योंकि you're constantly, आपको लगता है कि अगर मैं अपना phone scroll कर रहा हूँ तो यही मेरी break है, whereas a break is completely distancing yourself from something, taking that time to recharge. तो वो ये सारी blurred boundaries are really affecting people's mental health. And again, the point that Shazor mentioned, because you're confined in that वो चार दीवारी घर की, there is no outlet, maybe exercise करने की भी नहीं है, maybe for a lot of people कोई walk करने का, कोई lawn, कोई इस तरह की opportunities है ही नहीं, आप सिर्फ घर में confined हैं, तो there is high levels of frustration, of aggression, and a lot of people are struggling as well. So for people who are working from home, it's really important to take breaks. It's really important to reflect on your routine as well, to maybe even create like a separate work
स्पेस, जैसे आप टेबल पे लैपटॉप रख के काम करें बजाय कि अपने बेड से काम करें, यू नो, जस्ट टू डिफरेंशिएट दैट स्पेस. उससे मे बी यू नो देयर इज a little bit of clarity created in terms of अच्छा, or a routine created, and that helps with productivity, जो कि आजकल थोड़ा all time low पे गई है for a lot of people. इसमें जो हम लोग हमने स्पेसिफिकली बात की वर्क फ्रॉम होम की, व्हाट अबाउट पीपल हु आर ऑब्वियसली जब आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस खुल रहे हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हार्ड कोर हम लोग वर्क फ्रॉम होम पे नहीं गए फॉर वेरियस रीजंस, जितना बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल और एप्पल ने जिस तरह की है. बट यहाँ पे अब जिस तरह जो लोग जा रहे हैं, देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ गेटिंग कोविड, और इफ यू आर कमिंग बैक फ्रॉम कोविड यू आर एग्जॉस्टेड, यू फील वीक, you feel tired क्योंकि उसके अपने symptoms हैं. So what about the workforce that is now physically present in the office, and what are some of the things that they should look out other than work life balance, क्योंकि हमने उस पर बात की है. I think in the workspace, it's important for them to listen to their body. Okay, you know, if you are feeling exhausted and weak and you're recovering, listen to yourself. Take it, you know, build it up slowly. Not getting back into the 9 to 5 work day. Take it slow. Build it up. Build your resistance up, because obviously there is a danger out there. आपने अगर recover किया, there's मतलब immediate danger आपको नहीं है, लेकिन it's important for your own recovery. आपकी productivity भी आपकी health से affect होगी. So it's also important for organizations to take that into account. Other than that, I think it's important for a person to just focus on a set number of priority activities for a day. जैसे, you know, even when you're building it up, आज I'm going to focus on these 2 really important activities. Again, going back to it, reflecting कि ये मैंने plan किया था, ये हुआ आज के दिन में और ये नहीं हुआ. So even just taking time out for exercise, for self-care activities, really listening to yourself. Agar exhaustion hai, weakness hai, you know, get that treated. Take care of yourself. Yeah, I think if Shazor has anything to add to that. Yeah, I would also add कि managing expectations from employees, जैसे सारा ने कहा कि making prioritize, but also from the employers as well. They need to be mindful कि as the workplace is dynamic, चीजें change हुई हैं, people are coming back to work. Sometimes it is sort of half workforce, कभी कुछ work office पे हैं, कभी कुछ working from home है, तो वो चीज़ भी बहुत fluid है. So I think the managers and the higher ups should also be mindful कि the despite this COVID, the people are still coming to work. They still have a family to provide. They still have themselves to look out for. So I think उनकी expectations भी थोड़ी सी manage होनी चाहिए. They should also manage expectations कि all around the world productivity कम हुई है. So rather than placing the employees on the same high pedestal, उनको थोड़ा सा leeway देना चाहिए कि ठीक है, you are expected to work, but it's fine अगर हर चीज हर एक चीज हर काम पे नहीं होती. Sort of giving them some leeway to relax कि ठीक है. And even जो लोग recover हो जाते हैं, research shows कि उनकी maybe the capabilities have sort of declined as well. वो थक ज़्यादा जल्दी जाते हैं, concentration कम हो जाती है. So I think that should also be taken into account by the employees themselves कि ठीक है, मैं अगर पिछले जितना मैं पहले जितना focus पे काम करता था, that might not be possible for me. So it's important, जैसे सारा ने कहा, to take a break in between ताकि recharge हो. Same goes for the employers as well कि ठीक है, people that might have recovered even without any symptoms, लेकिन COVID has affected how their brain functions, उनकी concentration है, या even their own sort of energy levels. So I think expectation management and sort of reflecting back कि अब कहाँ है, पहले कहाँ थे, and sort of making sure कि things don't repeat themselves. Sort of. बिल्कुल, आई टोटली एग्री, क्योंकि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, और अभी भी वी आर एक्चुअली मिडल ऑफ इट. सो अभी भी हम समझ रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट, आई कॉल दिस एज फायर फाइटिंग, क्योंकि अभी भी वी आर वैक्सीनेशन आई है, Yeah. कितना इफेक्टिव है, क्या हो रहा है. सो दिस इज वी आर स्टिल इन मिडल ऑफ इट. बट जैसे आप दोनों ने बड़े प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिए हैं, एंड यू टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज दिस एक्सपेक्टेशन, इसमें आई जस्ट लाइक टू ऐड द लास्ट पार्ट, यही कि अगेन जिस तरह शायद ने बिल्कुल सही कहा है कि ज़्यादा जो मेरा ख्याल है वो हमारी लीडरशिप पे, हमारी मैनेजमेंट पे, डिसीजन मेकर, लेट्स कॉल देम डिसीजन मेकर, उनके ऊपर है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड. और जर्नली हमने जो बनाया हुआ, जिस तरह सारा लैक ऑफ एम्पैथी की बात करी थी, एक और चीज़ जिससे आई थिंक यू विल एग्री कि हर चीज़ एक रेस बना चुकी है. हम लोगों ने पढ़ना है तो वो भी रेस है, ग्रेड्स हमारे रेस हैं, जॉब रेस है, देन प्रोडक्टिविटी इज रेस. तो हर चीज़ हमने एक रेस में लगे हुए हैं. सो वी नीड टू स्लो डाउन, एंड आई विश कि ये पेंडेमिक में पिछले 2 साल में हमने देखा होता कि वी कुड स्लो डाउन एंड रिफ्लेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं हुआ जितना शायद होना चाहिए था. बट वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आप लोगों ने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए, आप लोगों ने अपने थॉट शेयर किए, एक्सपीरियंस शेयर किए. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू टू ज्वाइन मी टुडे.
Thank you for Thank having you us, so much Samad. It for was a hosting. pleasure.